Welcome back to Chasing the Target. Afghanistan shocking Sri Lanka with a phenomenal performance. Zabardast, batting kari Afghanistan, bowling भी quite, pleasant to watch. Tha. I think Sri Lanka had a very good opportunity to, थोड़ा बहुत get closer to that semi-final spot. India के लिए, थोड़ा बहुत एक challenging match रह सकता था against Sri Lanka, but Sri Lanka now predominantly अगर अपन देख रहे table, they don't look like they have a chance. Afghanistan climb over Sri Lanka right now with 6 points. Australia is at 8 points. Sri Lanka is at 4 points. Pakistan is 4 points. Um, Afghanistan right now looking like a team that is desperate to get into the semi-final. काफी जबरदस्त मेहनत चल रही है अफगानिस्तान की. पूरे कोचेस मेहनत कर रहे हैं. आप देखो प्रोजेक्टेड स्कोर्स लिखते जा रहे. प्रोजेक्टेड स्कोर्स के बाजू वो लोग कितने ओवर्स में कितने रन मारे वो देखने को मिला आज हम लोगों को. अफगानिस्तान, ये रहमत शाह जो प्लेयर है, आई थिंक फिनोमिनल फाइंड है, फिनोमिनल प्लेयर है इन लोगों के लिए. ज़बरदस्त उन्हें जिस तरीके से पूरी मैच्योरिटी से बैलेंस कर रहा है टीम को. ही इज टेकिंग हिज स्वीट टाइम ऑन द क्रीज, ही इज टेकिंग हिज गुड टाइम, मेकिंग एन इनिंग्स आउट ऑफ इट. जो उन्हें कट शॉट मार रहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, सीधा थर्ड मैन के ऊपर से छिक्के जाते रह रहे उसके. आई थिंक उन्हें वो टाइम ज़बरदस्त कर रहा. रहमत शाह हैज़ बीन फैंटास्टिक फॉर अफगानिस्तान. आज गुरबाज नहीं चला. मधुशंका की डिलीवरी ज़बरदस्त थी टुवर्ड द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स. आई थिंक थोड़ा बहुत गुरबाज टेकन अ बैक हो गया, लेकिन उसके बाद इब्राहिम जदरान और रहमत शाह की जो इनिंग्स थी, जो पार्टनरशिप थी, एंड देन द कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी कमिंग एंड फिनिशिंग थिंग्स ऑफ उमर जजाई एज वेल. सो अफगानिस्तान ओवरऑल जो वीकनेस थी उनकी, आई थिंक जो बैटिंग की प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत सबसाइड हो जा रहे. दे आर लुकिंग लाइक मोर ऑफ अ proper balanced squad, maturity, the way they're timing their forwards, the way they're rotating the strike. जबरदस्त टीम बनते जा रही है अफगानिस्तान थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप. आप देखो शुरुआत से लेकर अभी तक उनकी जो जर्नी रही, देयर बॉलिंग इज ऑलवेज बीन ट्रेमेंडस, ऑलवेज बीन थ्रेटनिंग, लेकिन आज कंप्लीट यूनिट के जैसे खेले. द पार्टनरशिप बिटवीन शाहिदी, रजाई, रहमत शाह एंड हशमतुल्लाह शाहिदी, आई थिंक फैंटास्टिक. बॉलिंग की अगर आप बात करें, फजल फारूकी द सनराइजर, जबरदस्त 4 विकेट लिया उन्हें. ही इज बिन बॉलिंग गुड. उसको काफी टाइम के बाद, ब्रेक के बाद आया उन्हें, तो आई थिंक उसको काफी अच्छा ब्रेक भी मिला था बीच में. Today picking up 4 for 34 and 10 overs, I think a ब्यूटीफुल स्पेल. ज़बरदस्त था उसको. भाई आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आप शायद चेंज करना पड़ेगा. आजम भाई सलाम, सबसे पहले थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. आई थिंक आपको एक बार, आई थिंक ऐप का कुछ प्रॉब्लम होगा, बट एक बार चेक कर लो आप. बट इसके हिसाब से अभी श्रीलंका के बेस्ट चांसेस थे ये. They could have qualified to do or got closer. इंडिया का मैच जो मुंबई में होने वाला है, it would have been better to watch के भाई श्रीलंका और साउथ अफ्रीका to fight. इंडिया predominantly qualify हो गई होगी. श्रीलंका also still I think have a slight chance, outside slight chance से again वो काफी अब काफ़ी आपको कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा. पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा. काफ़ी चीज़ इन लोगों के फेवर में होना पड़ेगा. श्रीलंका, पाकिस्तान जो टीम्स अभी 4 पॉइंट्स पे, काफ़ी चीज़ उन लोगों के लिए होना पड़ेगा. न्यूजीलैंड बैक टू बैक हारना, ऑस्ट्रेलिया जीतते जाना, एंड देन ये लोग अपने खुद के रिस्पेक्टिव मैचेस जीतते जाना, तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. लेकिन अफगानिस्तान राइट नाउ इज इन कंटेंशन. देयर स्पीकिंग विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. उन लोगों के नेक्स्ट फिक्सचर खाली मैं देखने की कोशिश करूँ कि उन लोगों का नेक्स्ट कौन कौन बचा हुआ है अफगानिस्तान को खेलने के लिए. एंड इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक जर्नी. अगर ये लोग सेमीफाइनल तक आ गए तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट बढ़ जाएगा अफगानिस्तान के टुवर्ड्स. आई थिंक अंडरडॉग टीम काफ़ी लोग, आई थिंक सोचे नहीं होंगे ऐसी अंडरडॉग टीम आएंगी विद इन द सेमीफाइनल. बट अगेन अभी वी कांट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्फ. न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड स्क्वाड. साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर जीत गए तो उनकी क्वालिफिकेशन स्पॉट ऑन हो जाएगी. बट अभी अफगानिस्तान नेदरलैंड से खेलने का है, अफगानिस्तान को खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, एंड साउथ अफ्रीका से खेलना है. सो यस, काफ़ी बड़े मैचेस है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अगर आप वो ऑपोजिशन रखे. लेकिन ये मैच्योरिटी अच्छी दिख रही है अफगानिस्तान के लिए. ये जो एक्सपीरियंस रहेगा, वट एवर दे टेक बैक फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप, पॉजिटिव्स ही लेके जाएंगे. यस, इनिशियली बॉलिंग नहीं तगड़ी दिख रही थी, बैटिंग में आउट होते जा रहे थे, लेकिन आई थिंक द वे दे कम बैक इन द टूर्नामेंट. हशमतुल्लाह शाहिदी इज अ फैंटास्टिक कैप्टन मेरे हिसाब से. ही इज ग्रूमिंग हिज बॉयज वेरी वेल. काफ़ी हद तक पॉजिटिव वाइब्स है कैंप में. कोई तरीके का आपको नहीं दिखता कि भाई इसकी बात उन्हें नहीं सुनता या राशिद इसकी बात नहीं सुनता. एवरीबडी इज ऑन वन लेवल. एंड द बैटिंग, द वे द बैटिंग हैज पिक्ड अप यार, गुरबाज के ऊपर निर्भर नहीं है. आप देख लो आज रहमत शाह, दिस गाय इज फैंटास्टिक. मुस्तफा भाई आ रहे ब्रेक पे नहीं है. मुस्तफा भाई दूसरे ब्रेक पे गए थे, अब आ गए उन्होंने ब्रेक से. बट यस उन्होंने आगे आजम भाई याद कर रहे थे आपको. अरे what's up Afghanistan, man, what a performance. Another giant killed, beaten, defeated.
ब्रिलियंट परफॉर्मेंस भाई। पिछले मैच में 8 विकेट से जीते, ये मैच में 7 विकेट से जीते भाई, जबरदस्त। श्रीलंका की फील्डिंग बहुत बेकार थी, बॉलिंग भी उतनी खास नहीं थी। चमीरा थोड़ा बिल्ड कर रहा था प्रेशर में, उन्हें भी पिट गया। बट अफगानिस्तान विद द बॉल, मुजीब वाज आउटस्टैंडिंग टुडे, वर्ल्ड क्लास मैन, रियली गुड बॉलिंग। जो एलबीडब्ल्यू उन्हें वो जो गूगली था, आई थिंक या एलबीडब्ल्यू जो गूगली था, वो जबरदस्त बॉल था। And then he got 1 wicket, I think, catch in the outfield. आई थिंक स्क्वायर लाइक, मगर ओवरऑल उसकी जो बॉलिंग थी बहुत टाइट रखा है। उसकी इकॉनमी भी अगर आप देखें तो अच्छा था आज। मेरे भाई अफगानिस्तान बोले तो क्या पाकिस्तान कुछ भी बोल रहे थे भाई, लेकिन आप बोल रहे थे मुस्तफा भाई, व्हाट अबाउट द सनराइजर ब्रो, हाउ डिड द सनराइजर प्ले? मैन अमेजिंग भाई। पिछले मैच में नूर अहमद 4 विकेट लिए, उसको निकाल के फजल हक लिया, उन्हें 4 विकेट लिया। सो दीज आर वेरी गुड सिलेक्शंस। आप देखे पिछले दिनों में, पिछले सालों में अफगानिस्तान क्रिकेट में थोड़े कंट्रोवर्सीज रहे थे। मोहम्मद शहजाद के साथ हुआ, उनके कैप्टन जो थे पहले असगर स्टानिक से, उनके साथ भी था। लेकिन अभी जो है दे आर गेटिंग सिलेक्शन स्पॉट ऑन। इट्स हार्ड टू ड्रॉप फजल हक, ब्रिंग इन नूर अहमद, देन ड्रॉप हिम एंड देन पिक। 4 विकेट लिया उन्हें लास्ट गेम में, बट दे आर प्लेइंग हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। दे हैड टू ड्रॉप हिम, दे हैड टू ब्रिंग इन फजल हक। अगर ये मैच हारे तो वी वुड ऑल्सो कि भाई नूर अहमद को क्यों नहीं खिलाया। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू मेक डिसीजंस लाइक दिस, बट दे आर मेकिंग देम। एंड हैट्स ऑफ टू दिस कैप्टन मैन। हशमतुल्लाह शाहिद, मैं बस वही बोल रहा था कि भाई क्लास कैप्टन है, क्लास। लाइक even in the field he's calm, he's collected, because Afghanis थोड़ा सा रहते जज्बाती, but he is very calm, collected. Even when he hit the winning runs, even against Pakistan and today, he was calm. Of course, he was happy and everything, but he is very good, calculated batter and captain. And this Azmat man, he is a great batsman. मेरे को बहुत पसंद ये बैटर। इंडिया के खिलाफ भी उन्हें अच्छा इनिंग खेला था। So overall, it's I think Afghanistan cricket is going upwards and upwards. उन लोगों को आउटसाइड चांस आ गया भाई। अभी हम लोग बात कर रहे थे कल, and now yes, they have to defeat Australia. They can definitely defeat Netherlands, but that's also a tough game. I think the Netherlands game might be a close one, but given South Africa's track record of losing to these it could be possible. So they're keeping the hopes alive, and now they're by challenging team. ऐसा नहीं कि underdogs है Afghanistan. They're going into games especially ये conditions में, and the main reason is उनकी बैटिंग इंप्रूव होगी। बॉलिंग तो हमारे को मालूम था, वर्ल्ड क्लास टैलेंट है उन लोग के पास, लेकिन बैटिंग का मसला हो रहा था। अभी अब उनकी टॉपर देखो, गुरबाज पे रहमत शाह भी जबरदस्त बैटर, इज काम, इज कलेक्टेड, वेरी experienced player. He strung a good partnership today. And then after that, Azmat and Hashmat, both of them, they both finished it off today. I think they batted really well. Batting has improved. From your perspective, how do you see the transition of Afghanistan in this World Cup itself? अपन जब शुरू में कर रहे थे, they lost a couple of games. They didn't look like the bowling, और इतनी बड़ी spin है, इतना वो है. But जो वापस उन्ना आए, do you see any particular reason as to why this Afghanistan एकदम sudden, they're growing in confidence? Their batting, अगर आप पहले मैच में देखिए 150 में ऑल आउट हो गए थे, they collapsed against Bangladesh. They were 120 for 2 or something, and they collapsed. So their batting was the problem. Bowling was never an issue for me. Rashid का form bowler ये वो, but there's very high quality spinners and bowlers in that. And also another thing that I wanted to point out is that fast bowling has improved. Yeah, a lot. Naveen आज अच्छा डिसीजन डाला, लेकिन फजल हक उनके फास्ट बॉलर्स इंप्रूव है, बैटिंग इंप्रूव हुए। दैट इज व्हाई दे डूइंग बेटर इन दिस टूर्नामेंट। आप खाली 30 ओवर स्पिनर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। T20 में चल जाता बिकॉज 20 ओवर का गेम है, लेकिन 50 ओवर में यू नीड ऑल डिपार्टमेंट्स टू शाइन एट सम पॉइंट, राइट? एंड नाउ द बैटर्स आर शाइनिंग. These two wins will give them huge confidence, and this is how Afghanistan have now graduated as a team, because they are chasing उन लोग के लिए तो उतना वो नहीं था. It was a very tough for them. आज तो भाई उन्हें टॉस जीत के बोला मैं चेस करूंगा, कॉन्फिडेंस आ गया कैप्टन में भी और टीम में भी. था कि भाई through the course of this World Cup जो भी even if they don't make the semi-final, let's just say for 1 second we all hope ऐसे कोई टीम आती है and stuff like that, but नहीं भी करे, they are only going to take positives from this World 100%. Cup back, and yes, they learned within the tournament. लर्न करना बहुत बड़ी बात है भाई कि आपकी मिडिल ऑर्डर सस्टेन नहीं हो पा रही. गुरबाज और जदरान पे आप काफी you're dependent on them, and then suddenly you just switch gears, and you saw today also the team management, they were writing the projected scores and then इन्ना कितने में डाल रहे. So there is some kind of a team effort that is going on from the management till the players के भाई नहीं, we have to prove a point, हम लोग इतनी दूर से आए, and irrespective आप सेमीफाइनल जाओ या ना, I think आप काफी हद तक you've shocked a lot of people, and credit to the whole Afghanistan team for that. Yeah, I mean it's fantastic to watch. Also shout out to Jonathan Trott, Ajay Jadeja. He came in भाई उन्हें भी like वो तारीफ कर रहे हैं उसके. I don't know उसका exactly क्या role है, मेरे हिसाब से I don't know what he's doing, but he is 100% giving them knowledge about conditions and he's helping them prepare according to pitches. ये जो team
team selections हो रहे हैं, I think Jadeja has an influence in Yeah, it, because 100%. I don't think it's easy to drop someone like a Noor Ahmed for this game. And How Pune could you do again, that? Mumbai ka hi banda hai na Yeah, Jadeja, like so he knows these ground conditions very well. who Ajit Jadeja. Yeah. Yeah, so like I think he has some influence in team selection, but I don't know uska exact kya role hai, but obviously he's having a positive influence. But the team, the leader, Hajmatullah Yeah, Shahidi, very he's good. done a fantastic job, because there's a former captains in this team. Rashid Khan hai, aapka in Nabi bhi hai. Gurbaz is also a character, so it's difficult to manage these Balance guys. egos, Yeah, but हाँ. he is balancing them. Yeah. We've seen in the past Afghanistan has had issues with egos, they've had issues with the board, but now they're looking like a unit. एक झुंड में आके unit के जैसा खेल रहे हैं उन लोग, and they're doing by he is member for Afghanistan. Mentor for Afghanistan. Yeah, so Yeah. mentor का मेरे को मतलब नहीं मालूम, but I think Basically it's like his what only, Dhoni right? was apparently in the 2020 which World Yeah, Cup. no, Yeah. like I understand mentor मतलब you're guiding and stuff, हाँ. but exact role उन्हें क्या contribute कर रहा है, क्या बुरा अब वो वही नहीं होगा ना, मालूम है. जैसा आप बोले he might be telling them about the pitches, He might be, telling yeah, about the that's what conditions, I'm assuming. obviously player के weaknesses, he's watching cricket, उन्होंने NDTV पे आते थे, उन्होंने काफी cricketing world में Crick bus पे. crick bus पे yeah, so उनको काफी experience and knowledge है, so you can't take that away. He's played World Cups as well, he knows what it's like to be in the thing. But for Sri Lanka, Mustafa, they look like they were on the verge of a comeback, a rise. If they won this, then going into that India match would be a different Sri Lanka team that we would see. Yeah. But today again they were just too. It didn't look like it was a very hard pitch to bat. I know Fazlullah bowled immensely well, hit the right lengths, but they just collapsed. Yeah, the strike rotation was very poor. After a decent start, I think in the middle overs they weren't able to get the single doubles. Boundaries were also drying up. I think Afghanistan, of course, they bowled really well, but their fielding was very bad today. Very poor. Sri Lanka's, The right? amount of overthrows, drop catches. Abhi last ball pe सीधा catch था, उन्हें छोड़ दिया and they won the game. Like this is very poor fielding. But yeah, Sri Lanka has had a very turbulent kind of series so far. Turbulent World Cup. They've had a lot of injuries. Angelo Matthews, he came in, he was the star against England. But more than anything, I think it's just shown that England has been really bad. Yeah. Because Sri Lanka are not the greatest of teams. And they're losing a lot of players. Lahiro Kumara चले गया just before this match. Hasaranga जो उनका ace spinner है उन्हें नहीं है. But I think Sri Lanka, the batting unit could have done much better. They could have got a bigger score. But yeah, like Mustafa said, 300 बनता था ये pitch पे. आराम आराम से 300 बनता था. I think 280, 300 would have been a good competitive score and they would have had a chance. 240 was never going to be enough because it was a good wicket. अगर आप pitch report भी देखे, there was not much in it for the spinners, not much in it for the faster bowlers. But Afghanistan stuck to their plans. I felt the field placement today was really good. And then bowling wise, they were setting up the batter. They weren't like Pakistan के खिलाफ उन्हें कैसा beat कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा था because the pitch was not allowing that. It's not the same as Chennai. लेकिन आज जो है उन लोग setup करे fields के साथ और even Rashid, the way he was bowling consistent line length. ठीक है एक आध boundary दे देता उन्हें, but the way he sets it up, it builds pressure for the other bowler. So they're hunting in packs right now and they're setting up batters. It's not just like they're beating them for good deliveries. Even for a 240, they didn't go haywire. जल्दी जल्दी मार के आउट करेंगे, खत्म करेंगे. Bray took sweet time लिया, आराम से खेले, बिल्कुल सुकून से खेले. भाई 240 मारना है, 50 ओवर है, हम enjoy करेंगे बैटिंग. आज एक नेट सेशन के लिए खेलेंगे. They took their sweet time, सब पार्टनरशिप बिल्ड करे. कोई एक टाइम पे भी ऐसा कोई रिस्की शॉट नहीं. हाँ, रहमत का वो शॉट अच्छा है जो ने कट मारा देखो. He's using the pace. Jamila को मारा था, I think. जबरदस्त छिक्का मारा उन्हें. And I think that is where Afghanistan maturity is there. आप शुरुआत के अगर अफगानिस्तान के मैचेस देखो या थ्रू द ईयर तक आप अफगानिस्तान देखो, गुरबाज आउट हो गया, जजरान आउट हो गया, एंड देन दे स्टार्ट कोलैप्सिंग. वो कोलैप्स आज एंड लास्ट 2 मैचेस से आप देखो होल्ड पे रख रहे हैं. बिल्डिंग रहमत शाह इज अ very crucial person in this team to hold up the fort. And then Hashmatullah now knows his role in this team, that he has to come and extend that innings. It's not only about Gurbaz and Zadran. There's like 6 more batsmen that have to prove a point. So and that's the thing, they're all contributing with the bat now. Before it wasn't like that. एक आध बैटर पे dependent थे. Even going into this World Cup, Asia Cup जब हम लोग देखे, हम लोग बोले भाई एक दो batters पे उन लोग dependent है. But they did get the revenge today. Remember Mohammad Nabi took them very close to qualification by beating Sri Lanka. वो लाहौर में या कहाँ था कि मैच या तो वो मैच भी खतरनाक था, लेकिन they lost that, not even qualified, छोड़ दो, they lost the game in the end and that broke their hearts. But today you would say they were got some sort of revenge. They're not looking at it as revenge, but they got them back for that loss. I think it's just based on the whole World Cup set, 2 points that they're getting, immense confidence going into Netherlands. If they manage to beat Netherlands, because Netherlands again, this is another team that it'll be a very good match to watch. If they beat Bangladesh in the first game, right now they would be semi-finalists. They would be top 4 100%, and then they would
probably hitting themselves right now कि हम लोग क्यों नहीं Yeah, जीते but वो. वही है कि आप सीखते रहे, एटलीस्ट उन हाँ. लोग सीखे. अब दूसरी टीम्स हारते जा रहे. अफगानिस्तान are learning from their losses. Even against New Zealand, that's a very good side. They lost that game, but they came back, they learned from that, and after that they chased. We Yeah. thought ki they India don't know. again the Yeah, same. Yeah. yeah, against India also, but we thought, these guys don't know how to chase, but they showed against Pakistan, they showed today against Sri Lanka that they can chase. They're doing a very good job, and They just need to stay consistent like this, I think, and just maintain this mindset that they've got of how to balance the innings in situationally खेल रहे. अगर score बड़ा है, take your time, build an innings. उस हिसाब से फिर आप प्रोजेक्टेड स्कोर डालते रहो 10-10 ओवर के गैप में. एंड आई थिंक वो बहुत जबरदस्त कर रहे और वो हैं. नैरेटिव चेंज हो गया. पहले रहता था हाँ. कि स्पिनर्स फंसा देंगे ये वो, मगर नाउ इट्स द होल टीम प्लेइंग एज अ यूनिट, हाँ. एंड देयर एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग समवेयर द अदर. एंड इफ यू सीन इन दिस वर्ल्ड कप, इट्स नॉट जस्ट स्पिनर्स गेटिंग यू विकेट्स. आप कल देख लो शमी का जो स्पेल था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग स्पेल्स यू विल सी. अभी हम लोग उस पे एक वीडियो करें, आप वो भी देख सकते वो हैं. भी देख हाँ. सकते हैं आप. और आप देखो, लाइक नॉर्मली आप एसोसिएट करते हैं ऐसा स्पेल इंग्लैंड में, हाँ. आप एसोसिएट करते हैं शायद ऑस्ट्रेलिया में. इंडिया में देयर इट इज कंड्यूसिव टू फास्ट bowling. It is also fast bowlers do have a say also. But this pitch in Yeah, even particular, Michael Pond said it on Quick Buzz yesterday. I was listening to him. He said ki, what I'm really happy and positive to see in this World Cup is that there's in it for everybody. It's not just spinners. It's not those dry surfaces only or anything like that. Today, yesterday what Shami bowled was like something you'd see in England, overcast conditions. So that's the good thing about these Indian pitches. It's not just like if you have a good spinning team, you'll win. No, you need your batters to step up. You need your Exactly. faster bowlers. Yeah. The way Shami and Bumrah are bowling, they're outshining everybody Yeah, right now. 100%. Right? They will not the next level डाल रहे line and length. It's all about the length for the fast bowlers. The margin of error is very less. For a spinner, again, get it into the right area, आपको wicket मिल जाएगा. So I think वो हिसाब से अगर आप डालते हैं, that's where India is executing their plan spot on. Kuldeep का जो ball था यार, I've not seen a ball like that in a long time. And then like that was a Shami spell as well the same. तो इंडिया has perfect obviously home conditions. यही एडवांटेज होता है कि आपको मालूम होता है कि पिच में किधर डालना है. It's not कि भाई they're making it totally against the opposition. It is something like Mustafa Bhai said, in it for everybody. And yeah, I think वो हिसाब से Afghanistan matured throughout the course of this World Cup, and we continue to see on Sri Lanka again the same problems with them. Weak batting, not showing sure way to bowl the line and lengths, and again fielding has been pathetic. So Sri Lanka again have to work back on that. Afghanistan going against Netherlands will be a good game to watch. Netherlands have shocked a few of their oppositions. Yeah. तो वो मजा आने वाला है देखने में. इन दैट एस्पेक्ट वही बोलूंगा कि भाई अभी तो अच्छा दिख रहा है, अफगानिस्तान चल सकते हैं. अब पाकिस्तान का भी मसला है. आप बोल रहे थे कुछ लाइक कुछ मैसेज आया था कि भाई देयर इज अ वेरी 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 लाइक मैथमेटिकली अगर हम रखे, New Zealand has to lose all their matches, Australia have to win all their matches, and Pakistan have to win all their matches, and then Sri Lanka have to lose their matches, India have to win their match. So it's very mathematical. But if these things happen, then you can predict India, not predict, you could see an India Pakistan semi-final then. Yeah, but that is very difficult. Very right, difficult. That's out of sight. Yeah. Like, I think if you're looking at it realistically, it might be India, Australia. I'm hoping that maybe someone like Afghanistan come in, but it might be India, Australia semi-final and South Africa, New Zealand. मगर अभी देखना पड़ेगा because New Zealand they're playing amazing cricket even though they lost. So I don't know like if they will actually have back-to-back losses or anything like that. I feel that they will fight back and maybe win. And India against Sri Lanka, we could see a slip up. I mean, I don't see a slip up to be honest, but anything is possible. Yeah, I think in the past also, you remember Champions Trophy 2017, India smashed everybody, but they lost to Sri Lanka in the group stages. I think people forget that, but Sri Lanka chased like 300 plus. So like Sri Lanka is not the it's kind of bogey team for India. So is Bangladesh, but I think the way India is playing right now, they'll destroy everybody until they go to the semi-finals. Then we'll see what happens. Then that's where the pressure comes. That's where the New Zealand, Australia, and then South Africa ka bhi ek test hai just before the semi. So the thing for India, they're playing a bit of a tough match just before the semi-final. Yes, Netherlands is the last match where they can get some rest. But India right now, जो momentum में है, जो rhythm में है, they look smashing. आप मेरे को बोलो, हम लोग बोलते भाई Australia looking amazing now, they're dangerous, we shouldn't play Australia in the semis, right? Do you think people in Australia are thinking we shouldn't play India in the semis? I think so. The way India is playing cricket, no one would want to play India right now, I guess. Yeah, like if you look at it, अगर उल्टा हम लोग इंडिया में बैठे तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया नहीं आना, they're looking very dangerous. New Zealand, we always choke against them. But if you look at it, all these other teams probably don't want to play this. Who would want to play this team in this country with the full like no support at all? Like you know, they're gonna no one are looking forward to playing India right now because of course your semi-final is semi-final, but their task would be
tougher if they play India. That doesn't mean 100%. they can't win. They can win, but I'm just saying कि अगर हम लोग जैसा बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आना, इन्हें नहीं आना, उन्हें नहीं आना, उन लोग ओनला भी वही, ओनला हाँ 100% बोल रहे होंगे भाई विराट कोहली के अगेंस्ट कौन बैटिंग बॉलिंग करना चाहेंगे और बॉलर्स के अगेंस्ट कौन बैटिंग करना चाहेगा। तो ये हिसाब से जो बॉलिंग चल रही है और ये हिसाब से जो बैटिंग चल रही है इंडिया की, फील्डिंग जो इंडिया की चल रही है, आई थिंक वो हिसाब से राइट नाउ इंडिया इज वन ऑफ द टफेस्ट ऑपोजिशंस दैट एनीवन वुड वांट टू प्ले। एंड आई थिंक राइट है, बिकॉज अपन यहाँ रहते हैं, अपन वही वो न्यूज़ देख लेते रहते हैं, वही वो ओपिनियंस लेते रहते हैं अपने को। तो आई थिंक वो हिसाब से अपन सोचते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट राइट नाउ इट लुक्स लाइक दैट इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, you know, that kind of a semi-final situation. But Afghanistan is showing signs that we're trying to fight. If they beat South Africa, if they beat Australia, if they beat Netherlands, these three teams if they manage to beat, then they create some noise. And then it's up to Australia to sort of win, and then New Zealand to sort of lose. So है थोड़ा बहुत scope अभी भी इस World Cup में for an upset or whatever you want to call it. There is still a scope of some kind of change in the top. But definitely, New Zealand do have a couple of tough games. I mean, they have to play South Africa too. And then the Pakistan game, if it's like do or die, that could be a very interesting game also. And then they have another game also that's relatively easy. I think Sri Lanka ke khilaf hai, which they'll be a bit more comfortable. But it doesn't mean that they can't lose all three or they will win all three. It can happen. Like it doesn't matter either way, because momentum is a big thing in World Cups. I feel ki bhai, if you go on a losing streak, that could affect you. But just the way New Zealand are playing the cricket right now, even their losses, they're fighting. Almost chased Yeah, 380, even India के खिलाफ already India को almost परेशान कर दिए थे उन लोगों गेम में. तो I think न्यूजीलैंड जो क्रिकेट खेल रही है सेमीफाइनल एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन still they have to do it on paper. They have to come on the field. They have to get the points. They can't let it on the field, because if they do, then they're going to really regret that game against Australia. And that's their bogey team, right? Like Australia. Yeah, that is their bogey team. So yeah, in the end, let's see what happens tomorrow. I think it's Pakistan versus Bangladesh. Yeah, Pakistan versus Bangladesh. वो मैच कलकत्ता में शायद कलकत्ता में सुबह नहीं दोपहर की मैच है। सुबह में तो न्यूजीलैंड का वो वाला न्यूजीलैंड का। हाँ, तो या आई थिंक अभी उस हिसाब से अगर अपन देख रहे मैच देखने में मजा आया। अफगानिस्तान को एक्चुअली मोर देन अफगानिस्तान को देखने में मजा इसलिए भी आया बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट मी एंड मुसा हैव बीन सीइंग दिस टीम फॉर क्वाइट सम टाइम। द मैच्योरिटी दैट वी कैन लाइक लुक एट देम। अरे भाई इनना ऐसा कोलैप्स हो जा रहे नहीं, 64-5 नहीं है, 84-5 नहीं है, राशिद आके स्विंगिंग वो नहीं था। आज प्रॉपर एक नेशनल अफगानिस्तान की टीम आपके सामने खेली। मैं 2015 उन लोगों को फॉलो करूं 2015 से अफगानिस्तान को, एंड नाउ आई सी देम एज अ प्रॉपर टीम। मतलब इन ऑल एरियाज देयर समथिंग समवन हु विल कंट्रीब्यूट। एंड ग्रेजुअली वो टेस्ट में भी आपको देखेगा, T20 तो देयर ऑलरेडी देयर, वनडेज देयर गॉट ऑलमोस्ट देयर, आई वुड से नॉट 100%, you need consistency, but then you've got the test match. And you have to also shout out those guys, man. Sharpozi Cav, जो लेफ्ट आर्म बॉलर था, असगर स्टैनिक्ज़ाई, मोहम्मद शहजाद, the ones who started it. Mohammad Nabi is he's been there since then. So you have to shout out those guys as well who took that. They started playing the cricket and everything, and they made way for someone like a Rashid Khan, for a Mujib, and now Rashid Khan will make way for Noor, and Noor will make way for someone else. So yeah, I was reading an article about Noor. He's basically like a right-handed Rashid, so he's going to really threaten teams आगे जाके, especially if a turning wicket है. He'll be a handful in the future. 100%. And he's only 19, 18, and you can see ridiculous talent. Already in the IPL, the first season that he's played, he's caused so much trouble for the batsmen in the IPL, and in the World Cup again, he's picked up 4 wickets. And the main thing now that I'm liking about them is that they're not they're not panicking as much. हारे भी तो ठीक है, जीते भी तो ठीक है, like they've got an Englishman in the coaching. They're not panicking as much. Before they used to panic a lot, I think, but now because they're playing more cricket together, they're understanding the game. You can say that they play leagues, but those leagues are giving them exposure exactly. शायद साथ में इकट्ठे नहीं खेल रहे, लेकिन उन लोग जो खेल रहे बाहर जाके, they're being able to use that now in big games. And everybody's bringing something back to the dressing room. Rashid Khan bringing Indian condition, Australian condition. Noor is bringing probably Indian as well as probably English conditions. कोई ना कोई 100 जो खेल रहे, जो भी PSL खेल रहे, जो भी, तो they know कि हाँ भाई इस जगह में ऐसा खेलना, इस जगह में ऐसा, एक बंदा contribute करता है, and that's what making this Afghanistan squad what it is right now. And like that Rahmat Shah guy right now, he's phenomenal. I think right now he's the balancer. He's the balancer. Yes, Umar Zazai played good. Umar Zaza is what's that full name, right? Asmatullah Umar Zaza. And then the captain as well. Captain को भी बहुत, I think बहुत ज़्यादा you need to give him a pat on the shoulder कि this guys brought this team back together from potentially like कोई भी team obviously ये ऐसे जो what you look at the rankings will be like अरे इनला तो निकल जाने वाला, but वो mentality जो उन्हें set करा, championship mentality है वो to
be able to come back and win two क्या three हो गया अब तो I think हाँ, in तीन a row. तीन जीत So गए. that is something मगर fantastic उनका from. वही है कि they're learning from their mistakes. हाँ. Hi Hi sir, Samam Junaid sir, hello. Junaid bhai, what's up buddy? वाह जुनैद भाई, But हाँ वही है, they're learning from their mistakes. कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मुस्तफा भाई, आप भी मैं अच्छे ठीक हूँ, हैं, बढ़िया. आप आप कैसे सुनाओ हो सौ, जुनैद कैसे सर? तबीयत आपकी? मेरे हिसाब से आई थिंक जो अभी मैच्योरिटी भी आगे, there's a good balance between youth and experience now in this team. हाँ. मोहम्मद अभी रहमत शाह बात करें, their experienced players. Now Shahidi, Rashid is also getting more experienced, and then you have youngsters. Naveen is also very experienced. This is his last World Cup. Versus Australia, at Wankhede will be difficult for Afghanistan. Absolutely, it will be a difficult game, 100%, especially Maxwell Waxel. मगर लेकिन मैं एक बोलूंगा कि उनकी बैटिंग भी इंप्रूव हो चुकी है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 400 मारेंगे अफगानिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विल आल्सो हैव टू वॉच आउट. एंड यू रिमेंबर इन ऑस्ट्रेलिया इन द T20 वर्ल्ड कप लास्ट Last ईयर, year. भाई फटा दिए थे ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान. It was in Australia, and I think Rashid came and smashed in the end and took the game really close. So I wouldn't back against Afghanistan. Yes, maybe the conditions won't suit them. If it was in Chennai, it would have been better. But now Afghanistan is a sort of team, especially now they can play in different types of conditions. And also Pune like similar थोड़ा बहुत conditions they understand. यार flat wicket है, yes छोटे और boundaries लेंगे वानखेड़े में probably, but again Afghanistan जैसी टीम में वहां पे चेस नहीं करना, लेकिन मेरे हिसाब से अभी स्विंग बहुत आ रहा है रात में मुंबई में. तो अगर आई डोंट नो ड्यू क्या सिचुएशन है, नॉर्मली वानखेड़े इज अमेजिंग फॉर चेसिंग, लेकिन ये मौसम में मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई द बॉल इज निपिंग अबाउट. वहां पे स्टार्क कैन बी अ हैंडफुल. सो Afghanistan back first, they get to like 280 300, and then Fazalak, yeah. they have Fazalak, they have Naveen, and then the spinners you don't want to it'll be tough for Australia. It won't be that 100%, easy. yeah. So I think in that game I'm backing Australia 70-30, but don't count Afghanistan I out mean in that game. Afghanistan, nobody even counted Afghanistan against England, and they beat England. Yeah. And then they beat Pakistan. And then they beat Though I Sri think Lanka. the So they more beat problem they'll have is against Netherlands, because मैं Yeah. अफगानिस्तान को ऐसा देख रहा हूँ मैं, भाई उन लोग बड़े टीमों को सुकून से खेले आराम से. They're playing positive and everything because they're the underdogs. But when अब they're playing अंडरडॉग थोड़ा बहुत ईगो आ because जाएगा. बांग्लादेश के खिलाफ आप हाँ. देखो प्रॉब्लम हुआ उन लोगों Yes. को. फिर आज तो नहीं हुआ प्रॉब्लम, लेकिन मे बी अगेंस्ट नेदरलैंड्स इज प्लेइंग सम फैंटास्टिक क्रिकेट. या वो दत्त, वो एकरमैन जो उनका कैप्टन, स्कॉट एडवर्ड्स जो कैप्टन है, हाँ. एकरमैन जो उनका बॉलर है, these guys are causing a little bit of problem. Random of The guy who's on the top, Vikramjit Singh, he's giving them a decent Miskoren, start. Van Meekeren, क्या नाम है उसका? हाँ, वैन मिकरन, हाँ. टीडी क्या है उसका नाम? P Diddy. हाँ, P Diddy. तो ये लोग है यार, नेदरलैंड्स की टीम again, they've also upsetted a few teams right now, and yeah, South Africa, which is one of the top run scoring team, दो बार upset कर दी, 20 में 50 में. But again, I hope Afghanistan wins the next game. But yeah, it's just still like, let's see what's going to happen in that match. It's good match, like Mustafa bhai said, when an underdog comes, आपके नीचे कोई वाला आया तो थोड़ा बहुत आप तगड़े होने जाते हैं, and that could backfire. Yeah, that will be a good game. Any update on Hardik Pandya's fitness? Nothing yet. Yesterday, Harambe also said the same thing, that we are waiting for an update on Hardik Pandya. Who? Paris Harambe. Paris Mamre. Mamre. अच्छा, Harambe तो वो गुरिल्ला था. Sorry, गुरिल्ला था वो. हाँ, तो पारस, जो भी उनका सेकंड नाम है, हरामबे. हाँ, हरामबे. He said कि we're still waiting on Hardik Pandya's update, ताकि we can assess कि भाई इनको किधर फिट करना है. आप बोल रहे हो ना आउट ऑफ द टूर्नामेंट है ये खबर? मेरे को पर्सनली लग रहा ना सेमीफाइनल तक अगर आया तो ठीक है, बट लाइक द एंकल इंजरी, द ACL अगर टेयर का ऊपर है, लेवल 1 2 3 ग्रेड होता है इसमें, ग्रेड 2 या 3 रहा तो मुश्किल है यार. मैं एक चीज बोलूं, but he did walk into the Ikana practice center. I think I saw him in the bag or something. But you know what the crazy thing is though, the way they've handled it after his his injury, पूरे भाई they've been playing crazy cricket despite that. करना उधर सूर्य कुमार जो 49 मारा, and what's his name, the bowler Shami. अभी तो लोग बोल रहे हैं कि अय्यर को ड्रॉप करो. अय्यर का तो वही है ना, वो शॉर्ट बॉल डाले तो उन्हें लॉन्ग हो जाते हैं, शॉर्ट बॉल में उन्हें आउट हो जाते हैं. Against Australia, I'm thinking if it's a semi-final, Hazelwood, Mitchell Stark, they they're know gonna him, man. pepper him, bro. Yeah, they know him very well, and Sri Lanka के against भी देखना पड़ेगा. I think they'll give him another chance. What Sri Lanka comes up with, because Madhushanka was bowling a few good short balls as well. आपको याद है अभी एक महीना पहले हम लोग पूरे चैनल सब बोल रहे थे कि भाई मुंबई इंडियन की टीम है, अरे ये इन लोग ऐसा है, अरे केएल राहुल फिट ही नहीं है, इन्हें नहीं है. बट मुंबई की टीम ही नहीं खेल रही. हाँ, बट मुंबई के बच्चे नहीं खेल रहे, ईशान नहीं खेल रहा, सूर्या नहीं खेल रहा. हाँ, नहीं मतलब खेल चुके हैं ये वर्ल्ड कप में भी, बट आई एम जस्ट इन जनरल जो स्क्वाड सेलेक्ट करे, बुमराह की कैसी फिटनेस रहेगी, स्पिन कैसा रहेगा, ये क्या रहेगा, राइट नाउ वो सब भूलिया, लाइक द वे दे आर प्लेइंग. Yeah man, like that's top quality. Rohit Sharma, the way he's handling this team, man, and again Virat and Rohit's communication,
everything is coming together for this Indian team. All the problems that was going here and there. You see Rohit Sharma, the way he's handling everything has been good. Sir, आप या तो हिंदी में बात कीजिए या फिर रिलैक्स में तेलुगु में नहीं रिगा हाँ प्रेडिक्शन फॉर टुमारोज दूसरा वर्ड नहीं आ रहा वर्स्ट होगा। वर्सेस वर्स्ट मैं बात करूंगा हिंदी में, सॉरी। वर्स्ट वर्सेस वर्स्ट मैच है कल पाकिस्तान। सर सारी नहीं, कोई बात नहीं जुनेर भाई, आपको जो कंफर्टेबल है हम वही बात करेंगे। हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। रिलैक्सली में वो सेकंड वर्ड नहीं आ रहा मुझे। प्रेडिक्शन ऑफ टुमारोज वर्स्ट वर्सेस वर्स्ट मैच पाकिस्तान। अच्छा तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का आपके हिसाब से कौन जीतेगा मैच? Tough one, huh? Yeah. Battle of the Yeah. wooden spoon. No, England is wooden spoon. I think Pakistan will win It tomorrow. is a card for Derby, Pakistan और yeah, it is East Pakistan, West Pakistan, बिल्कुल something वही like था that. एक ज़माने में। But हाँ मेरे हिसाब से पाकिस्तान जीतना चाहिए कल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन लोग अच्छा फाइट बैक करे। एंड दे विल वांट टू प्रूव अ पॉइंट बिकॉज़ जो अभी हमें समझ में आ रहा है जो व्हाट्सएप के बहुत प्रॉब्लम चल रहे भाई वहां पे। हाँ इंजमाम भी छोड़ दिया इफेक्टिवली, इंजमाम ने भी हाथ उठा दिए, उन्होंने बोला मैं छोड़ दे रहा हूँ भाई ये। और बांग्लादेश उतना खास खेल रही नहीं, बांग्लादेश कॉन्फिडेंस में नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं है। अब देखो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, मगर अगर मैं प्रेडिक्शन दिया तो मैं शायद पाकिस्तान जीत दूंगा मेरे हिसाब से। या मैं भी वही बोलूंगा, आई थिंक पाकिस्तान जीतेंगे एंड प्रोबेबली आपको यहाँ पे कल 100 दिख सकता है बाबर आजम का। वो तो कब से बोल रहे हैं बाबर आजम का 100 आने वाला है। आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता? ही आई नो 100 मार के बाद फिर वो दैट वाज वो 100 अगर मार दिए कल तो फिर वो क्या 100 उन्हें 200 बॉल में मारा तो कोई फर्क 2027 में आएगा नेक्स्ट वर्ल्ड कप। मैक्सवेल नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2026 2027 4 साल लगा। 2027 तक स्ट्रेच होगा ये 100। भाई मेरी बात सुनो, अगर उन्हें अगर 40 भी मार दिया 20 बॉल में, बहुत बड़ी बात है। लाइक यू डोंट नीड 100, यू जस्ट नीड हिम टू प्ले विद इंटेंट, यू नीड हिम टू टेक द सिंगल स्ट्रोक, कंज्यूम सो मेनी। आप स्ट्राइक रेट 70 के चला रहे आधा गेम तो वही प्रॉब्लम हो रहा राइट। बट लेकिन अभी देखो कलकत्ता में है, वहां पे ट्रेंडिंग ट्रैक दिख रहा, सो इट वोंट बी इजी फॉर पाकिस्तान। साकिब वासिफ उन्हें मेहदी घुस जाते हैं और उन लोग भी अच्छे बॉलर हैं, लेकिन और पाकिस्तान स्पिनर स्टिल नॉट इम्प्रेसिंग अस। शायद आपका क्या सीन है? उन्हें लोग बोल रहे हैं कि स्कैन भेजे उसको तो उन्हें ठीक था, बोल के मैं अब्दुल रज़ाक उन लोग का शो देख रहा था परसों। आई डोंट नो वो कितना लिजिट है। उन लोग वहां पे रिपोर्टर बोल रहे थे कि भाई दे डिड द स्कैन्स एंड एवरीथिंग एंड ही वाज कंप्लीटली फाइन, कोई इशू ही नहीं था उसको। अच्छा इंग्लिश था वो, नहीं मेरे को अपडेट हो कुछ नहीं मालूम। छोड़ी भाई की, छोड़ी भाई हमारे शबी बोलते, छोड़ी बोलते क्या बोलते? मैं तो शाड़ी बोलता हूं। शाड़ी भाई का अपडेट नहीं मालूम बिकॉज़ उन्होंने जिस तरीके से लेटे थे मैं तो समझा अपन उठेंगे नहीं। उनकी रीड कार्ड में पंचा मारे तो जाके रीड कार्ड सही होंगी उनकी, लेकिन फिर उनको देखे तो थोड़ी देर में वहां बैठे थे आराम से। तो अभी आप कोई अपडेट तो नहीं है शायद आपके कंडीशन पे कि भाई उन्होंने नहीं खेलने वाले हैं, कुछ ऐसा कोई न्यूज तो नहीं आया हमारे को। द मोर द न्यूज यही सर्कुलेट हो रही पाकिस्तान में कि भाई द होल पीसीबी बाबर आजम इशू और इंजमाम के ऊपर इशू। तो शादाब का शायद हमें सुबह ही मालूम होगा कि क्या अपडेट है। साकिब भाई महमूदुल्लाह को प्रमोट करना है, ऐसा उसको नहीं खिला सकते। बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, यू वेस्टिंग हिज टैलेंट। हो द महमूदुल्लाह, या ब्रो वो ना तो 100 मार दे रहे हो आके पॉइंट प्रूफ कर दे रहे 7-8 पे खिला रहे, उसका पोजीशन नहीं है भैया। अगर आप देख रहे हैं शाकिब भाई, उसको प्रमोट करो कल। और यू नो ही इज योर बेस्ट बैटर। ऐसा उन्हें भी साकिब भी कुछ खास नहीं कर रहा है, उसका तो हाईएस्ट 40 चला है और उसकी टीम उतनी बुरी नहीं है साकिब की। लाइक इट्स अ गुड बांग्लादेश। क्लिक नहीं हो रही भाई, लिटिन ने क्लिक हो रहा, शंटो क्लिक नहीं हो रहा, और सिलेक्शन भी बैटिंग ऑर्डर भी सही नहीं है, बोलिंग चेंजेस उसकी भी सही नहीं है। तो देयर इज आपके पास टैलेंट है, लेकिन यू हैव टू वर्क। एंड आल्सो अनदर थिंग इज बांग्लादेश दे हैव टू चेंज देयर स्ट्रक्चर एट होम। उन लोग टफ ऐसा पिचेस बना देते, छूट देते, इंडिया को भी मार देते, इंग्लैंड को मार देते, पाकिस्तान को मार देते, लेकिन those pitches are only there, they don't exist anywhere else in the world. हाँ तो so they have to learn how to play on different pitches. फ्लैटर थोड़ा मूवमेंट वाले थोड़े वो खाली 5 स्पिनर के साथ खेलेंगे वैसा नहीं होगा भाई। फिर यहाँ पे आपके खुद स्पिनर्स will struggle because they're like oh my god I don't get that pitch. And I think ये लोग भी थक चुके हैं यार, like all of them are dead because most of this team is playing together again for throughout the year। आप वही टीम खिलाते हैं, टेस्ट में भी आप more or less वही टीम खिलाते। मेहदी हसन तो दिसंबर से खेल रहा जहाँ तक मेरे को याद है। probably खाली वो दूसरा कौन सा था लेफ्ट आर्मर जो विराट कोहली को preparation was not right. like I think पॉलिटिक्स तो चलते रहते हैं बांग्लादेश के भी, इश्यूज चलते रहते हैं इनके पास। देखेंगे कल क्या होगा। कैप्टनसी चेंज होते रहती, शाकिब लास्ट मिनट फिर कैप्टन बना, लिटन कैप्टन था, इन्हें कैप्टन था। तो यस लाइक मुस्तफा सेड उनकी मैनेजमेंट थोड़ी बहुत ऑफ है एंड पिचेस वाइज दे नीड टू डू बेटर। बट या आई थिंक कल हम लोग के हिसाब से पाकिस्तान, हां पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान आई थिंक विल। एंड यू सी इमामुल हक प्लेइंग टुमारो। चिच्चा चले गए, भांजा खेलेगा, भतीजा खेलेगा क्या? अफगानिस्तान सेमीफाइनल, क्या बात है, बिग बेबी इन द हाउस, डूबी मैन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, wagwan in it bro।
अफगानिस्तान सेमीफाइनल बोल रहे, क्या अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में हम लोग काले कुर्ते डाल गए भाई, अंडरडॉग्स तो भाई सपोर्ट मतलब करेंगे, कैसा क्यों नहीं? कलरफुल है यार अफगानिस्तान की क्राउड, Their fans are crazy man. यहाँ पे भी है जबरदस्त है लोग, मतलब। they'll be enjoying tonight रोज बुखारी और ये सब खाने वाले हैं, कबाब्स, roti. But yeah, man, why not? If they make it to the semi-final, that'll be crazy. मजा आ But जाएगा। from a cricketing point of view, if you see the four best teams right now have been India, New Zealand, South Africa, Australia. वो तो Australia है didn't start off as dominating। the best team, but they're looking really good. Guys, your thoughts? My एक thought मिनट सर, on DRS. तमीम के साथ गलत क्या साकिब ने? तमीम का मेरे को समझ में नहीं आया, उसको ड्रॉप करे या उसको लिए ने, ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं जुनेद भाई व्हाट वाज द सीन, बिकॉज उनको प्रेसिडेंट आके, प्राइम मिनिस्टर आके बोले थे कि तू तमीम तू खेल मेरा तमीम तू मेरा खेल, तू मेरा तमीम मत शंट हो गया। तमीम भाई तुम खेलो बोल के बोले, वो लेकिन तो क्या हुआ? वही है, साकिब प्लेइंग पॉलिटिक्स एज वेल मैन, साकिब अल हसन। एक सवाल आता है डीआरएस के बारे में, मैं वो जवाब दे सकता हूं। Guys, your thoughts on the DRS? This World Cup looks too much glitchy and Yeah, it's gay. bullshit, bro. Like it's pathetic. I'll be very honest with you that पाकिस्तान के उन्हें तो प्लम था शमसी, वो भी वैंडर लूसन का, वो भी मेरे को नॉट आउट दिख रहा था। फिर जडेजा का कुछ हुआ था राइट अभी कल, वो भी डीआरएस मेरे को डॉजी दिखा। It's been BS man. I don't कुलदीप understand. का था आई थिंक वो, कौन सा? नहीं कुलदीप का वो तो तो लिए नहीं रिव्यू, लिए नहीं नहीं वो review, जो आई थिंक जडेजा बैटिंग कर रहा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। आप लोग मेरे को honestly the Haris Rauf, because I don't know Vander Dusen का as such, it was clipping and that was umpire's call, that was fine for me as for my perspective, but you saw what happened before that. हाँ the missing जो आ गया था एकदम गलती से, वो तो खैर चलो भाई, वो तो ग्राफिक्स आप अपलोड भाई करेंगे। ये नहीं, हमारे बच्चों का स्कूल क्रिकेट नहीं चल रहा था, वर्ल्ड कप गोइंग ऑन, चलो ठीक है ये बता बोल रहे। हारिस रफ का तो ये था कि भाई it was banging in this गुजरा रहा था उन्हें, तो the ball was hitting the stumps and बिल्कुल spot on। हमारे कौन बोले, पार्थ भाई जो बोल रहे कि भाई it is a little glitchy, it is a little vague। I think screw the umpires call, man, umpires को हकाल दो, अगर लग रहा विकेट को तो भाई naturally want it like the bails fall and the wicket will go। Yeah, message आ गया बॉस का, Mike you have to keep it next to your mouth, it's right here buddy, sorry about that। मैसेज भी आ गया, Afghanistan versus Aussie will be massive। Afghanistan, yeah, it will be absolutely massive। Is in Wankhede, अपने भाई बोल रहे थे कि that will suit Australia, लेकिन I'm thinking the way Afghanistan is playing right now, they're playing horses for courses, they're down for any pitch bro। you're holding bring like it the on। rock, वो जबरदस्त खेल रहे हैं उन लोग, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो I think that should be an exciting game। DRS आप भैया बहुत बेकार है ये टूर्नामेंट में, ऐसा वर्ल्ड कप के लिए नहीं बना सकते। आप टेक्नोलॉजी है आपके पास, यूज करो। Again, I'm saying technology doesn't have to be 100%. People will say 100% होना चाहिए, but it's at the end of the day, it's made by humans, right? So मेरा एक ही चीज है कि अगर विकेट को लग रहा है तो एम्पायर्स कॉल की जरूरत क्या है उसमें? अगर विकेट को लग रहा है तो एम्पायर्स कॉल की, हर्षा भोगले, हरभजन सिंह जैसे लोग निकल के आके प्रोटेस्ट करे कि भाई ये क्या है एम्पायर्स कॉल? एम्पायर्स कॉल मेक्स नो सेंस। इफ इट्स हिटिंग द विकेट, इट्स हिटिंग द विकेट। हाँ चलो, पिचिंग इन लाइन, पिचिंग आउट लाइन, ये तो पिचिंग इन लाइन, हिटिंग द स्टंप्स, what else do you need from that? Why the umpires call? So I mean yes, बिल्कुल सही बोले पारस भाई, आपके थोड़ा बहुत वेग एंड स्टफ है, बट आप कहाँ के हो? हम लोग हैदराबाद के हैं। आप वो मैं हैदराबाद का हूँ। ये बंदे जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस के हैं, 1000 कंट्रीज में से 10 कंट्री में रहते हैं माशाल्लाह। half Hyderabad, half भोपाल, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। From India I'm from Hyderabad and Gujarat, from England I'm from London, from Saudi I'm from Jeddah, from Canada I'm from Toronto। My great grandmother is British। वैसा तो my grandfather is Afghanistan। No, my mom's Dadi, you've met her also when you were a kid। Oh yes। Yeah, ऐसा बोल रहे मैं जो yes, she was white। Yeah, so her name is Barbara। Come on man। Musawa was upset that England lost। My grandfather's mother, bro, you don't remember I know। Barbara bro, mummy Barbara bro। तो हम लोग पूरे बात की 100 बात की एक बात, हम लोग अभी हैदराबाद में है और हैदराबाद के, सॉरी डॉन, हम लोग माइक इधर उधर करते रहे। Guys of Chennai baby, Super Kings represent। तो yeah, I mean overall this is my take on DR, is that umpires call should be like completely just walked out, खत्म कर दो umpires call। अगर लग रहा तो आउट दे दो, नहीं लग रहा तो मत आउट दो, like that's as fair as you can get। हाँ, umpires call का reasoning यही है कि भाई like the on field is the best judge, but I'm saying if he's making a mistake then why would he go to why that? Oh my god, it's like, if that's the reasoning then that's the most bullshit reasoning ever। And so आप bowler, अगर आप bowler है, आपका umpire नहीं दिया out, you're seeing that it's hitting the line and it's hitting the wicket, so you get pissed man। but उसका तो भाई वो technology में glitch था, like umpires call I understand right, but that is not umpires call I'm saying exactly on technology and that's what I'm saying। आप umpires call के साथ बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ umpire call था ही नहीं वो। बिल्कुल सही। हाँ अच्छा वो was crashing into stumps। Exactly, वही तो बोल रहा हूँ, it's crashing। मैं टेक्निकल बोलूं, टेक्निकल मतलब मेरे हिसाब से जो था, हाँ मैं टेक्निकल हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि उन्हें शफल करा तो उसका लेग स्टंप दिख रहा शमसी का, that means crashing into leg stump bro। That's what I feel, that it was a
pathetic Yeah, decision. India, Afghanistan, bhai bhai, bilkul bhai bhai, sab bhai bhai. And yeah, I mean that empire call तो no one's understanding है, like हर्षा बोगले बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकल के आके आप प्रोटेस्ट करे कि भाई ये डीआरएस चल रहा नहीं. हरभजन भी बोला हरभजन परसों, भी या बोला, उतना बड़ा स्टेटमेंट निकाला हर्षा या बोगले, उसके बाद बोले तो काफी लोग इवन फ्रॉम इंडिया वर सेइंग कि भाई दिस इज नॉट गोना मेक सेंस, एंड इट डजंट मेक सेंस बिकॉज भाई क्वालिफिक भाई जो तरीके का मैच वापस लाया आप, कॉन्टेक्स्ट देखो आप, nerve wracking over from Anes Rab, and then yeah, But Sachin by the way, Bhagat. like there has been issues in this World Cup, like organization, this, that, and everything. But everything will change once we get like more cliffhangers. We go to the knockouts. I think Yeah, this next 2-3 weeks is going to be a lot of fun. I hope this week is fun. I hope Afghanistan makes some magic happen. And if they get into the semi-final, there'll be one team that everybody will like potentially be happy about or proud Yeah. about. कि भाई ये बंदे कहाँ से आ गए? And I think that's something that we look forward to as well. England said bye bye. Pakistan on the verge of saying bye bye. कल अगर बांग्लादेश से आ गए तो 100% bye bye. Bangladesh is also bye bye. Netherlands is also bye bye. So more or less, you have 5 teams still in the mix of the World Cup अभी qualification. अभी आधा से ज्यादा टूर्नामेंट खत्म हो गया. हाँ, हो गया. आपके हिसाब से आपका फेवरेट बैटर कौन था ये टूर्नामेंट में फेवरेट अभी तक? हाँ. बैटर अभी तक मेरा काफी चॉइसेस यार, अगर मैं सोच रहा हूँ, बट मेरा फेवरेट अगर मैं बोलूँ, it has been like I can say Virat Kohli very easily, but I don't want to. That's the most obvious pick. I will say. I mean, it's up to you. Yeah, I your know. And opinion. It doesn't have to. It doesn't I'm going matter through. if it's I'm going obvious. in my head team by team. Why do you have to be different, bro? It's like a Maggi masala. It's different. It's obvious. Rohit Sharma. I think Rohit Sharma for me. The Rohit class, Sharma is a yeah, very good sheer choice. class, And sheer bowler? class. Bowler has been Bumrah. Like I'll never not say Bumrah. Yeah, Like, Kuldeep is there, yes, but Bumrah because fast bowlers के लिए मुश्किल है, और मुश्किल में भी उन्हें जो fast bowling कर रहा flat surfaces पे, that is what's taking my. Yeah. And like this team is nothing without Bumrah. Like if Bumrah is here, that's why the batsmen are confident. And exactly, Rohit for his starts part and you nailed it. But like for me, Bumrah, the way he's giving confidence to the entire team, and he's bowling 134, 100. He's come back after 2 years, man. Like 1.5 years. Like how do you bowl बेहतरीन like bowling that, and करता how है. you hitting those lengths? Yeah, बेहतरीन bowling For करा. you, sir. I think batting Henrik Klaasen, there's no Oh, doubt, without a man, shadow of a doubt, he's yeah. been outstanding. Second, I would have put in Quinton. It was between these two, and between the bowlers for me, it was between Kuldeep and Shami. I would go with Shami, man, because there's in 2 games he's 9 wickets. changed the whole narrative of the Yeah, World Cup. yeah. This guy is the best fast bowler so far, man, that I've seen in this World Cup. Just spell that Ben Stokes, my favorite player. I'm not going to shy away from it. He's my favorite player, Ben Stokes. Yeah. But the way he set him up, man, yesterday. And it was a crap shot that he got out to, but look, he couldn't touch him. Yeah. It reminded me of the Ricky Ponting spell Flintoff bowled him in Ashes. वो तो red ball था, overcast England. यहाँ पे तो भाई लखनऊ में उन्हें which is more conducive to spin bowling. He is bowling like that, beating the outside edge. It felt like I was in Lords or something like that. It was an incredible spell. That was the best over of the World Cup. And I think yesterday Kuldeep bhai bowled the ball of the tournament. Oh भाई, Butler को वो through तो the मैं gate. बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई लेग स्पिनर के साथ Yeah, बॉल that डाला was है, world class, जॉर्ज man. बटलर खुद परेशान होकर खड़ गया 2 सेकंड को, क्या क्या हो गया ये, एंड देन कुलदीप भाई बोले कुछ नहीं होते रहता है, चलो. Yeah, Henrik Klaasen, bro, because this guy is doing it every single tournament, every league, and without moving. आपको मालूम Without moving. अमेरिका में भी उन्हें 100 मारा था ये सब. Yes, MLC में वहां पे भी 100 मारा, IPL में मारा 100 हर जगह. Seattle Orcas कौन सी टीम? Yeah, I remember watching the game with Don. We were both like not together, but we were on a call. And Klaasen, bro, he just stands in one place, and the way he's batting, it's been incredible. What about Mr. Aiden Markram? Huh? Aiden Markram. He's been really good as well. But I think if you look at South Africa, if you have to rank their batters, you would probably put Quinton, Klaasen, and Markram. I just put Klaasen because I think that England knock that just changed the whole thing for me, because you just came back from Netherlands, you're 230 for 5, you could have collapsed to under 300, and then England ran the game. Who knew that England would be so crap? But like I would think under 300 would be a decent total to chase. 100%. He completely took it out, and it was him and Marco Jansen the last pair. So for me, Klaasen has been the hero, man. And then the other game he made 90 also was against Bangladesh. I think a lot of heroes are there in South Africa. If now I'm thinking about it, Marco Jansen is also one hero that's coming out. Will England miss Champions Trophy 2025? Yes, they need to qualify above 8th or till 8th spot. So do you think England will make it to the Champions Trophy? Where's the Champions Trophy? You know what the stupidest thing is? Maybe Dubai then.
The stupidest thing is the coach found out yesterday that जो Matthew अरे Marks रे है. ये तो अफगानिस्तान का याद आ गया मेरे को. Yeah, he अफगानिस्तान याद found है out yesterday. हलाल उन्हें में बोला रनरेट के प्रेशर ऊपर. में, he said मेरे को मालूम ही नहीं है रूल है बोल के. क्या बात. लाइट ले रहे थे उन लोग. भाई अगर इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है तो बहुत बड़ा जीतेंगे तो बहुत बड़ा लॉस रहेगा. चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए तो लाइक एंड देन पाकिस्तान तो जिस तरीके से दिसंबर में खेल रहे थे ना पाकिस्तान. Pakistan get automatic qualification Yeah. because they are the hosts. Yeah. So they will get qualification, but England need to come in the top 8. Will they? Man, there's big now they have to potential. beat They have to beat England, England, Australia, New Zealand, England. They can't beat themselves, bro. They're No, already that's not doing England. that. I'm just saying the fixture. Like England they have to play Australia, they have to play New Zealand, and they have to play one more. Pakistan. Oh, जबरदस्त. हो. So क्या there बात is है. That's a good question, बड़ा part. possibility है भाई कि that they don't win, they don't come in the top 8, but that will be a huge loss. श्रीलंका वर्सेस इंडिया 2 तारीख वर्ल्ड कप. बिल्कुल बिक्कू भाई, दैट इज वेयर हम लोग कोशिश करेंगे वहां जाने के लिए. भाई क्या बोल रही पब्लिक. एक नंबर. मैं परसों इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया तो मुंबई बुला दिया. Mumbai on time, the city of dreams. Bollywood fans is coming, baby, with his muscles. Be ready. तो मैं बोल दिया वायरल बयानी को रेडी हो जा भाई. आ रहे भाई पूरा वायरल बयानी में खिलाऊंगा तो वायरल बिरयानी. जो मैं बोल दिया स्टेशन का नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर सब वहां पे रेडी रहेंगे कैमरास के साथ. तुम नाइट सूट में निकलो, चड्डी में निकलो, डजंट मैटर. So I call it my train look. My train station look. Oh, it's gonna be crazy. Mumbai, yaar, bhai, that's one of my favorite cities, man. Mumbai, man. Yeah, I'll send you Mike, bro. क्या हुआ? सुदीप बाबा आ गए. भाई मैं इधर ही बैठा, इधर ही रखा हुआ. सुदीप दादा का भाई क्या बोल माइक का बोल. पिच रिपोर्ट नहीं मालूम भैया मेरे को. Mumbai Punter is with us today, buddy. Guys, I'm from Mumbai. मेरा मूड चेंज हो गया. पंटर आ गया भाई. पार्थ भाई क्या बोल रहे? रुको जी. Saying I'm from Mumbai. Oh, he's going to Wankhede. He's going to Wankhede. पार्थ भाई. भाई आप मिलिए वहाँ पे. हमारे भाई जाएंगे वहाँ पे. मुंबई. Done. Oh my God, man, what a city, bro. Mumbai is gonna be crazy. वहाँ पे बांद्रा से लेके ब्रिज कैंडी से लेके मोहम्मद अली रोड. कौन सा मोहम्मद अली रोड है वो? नहीं. हाँ मोहम्मद अली. पक्का. हाँ पक्का. भाई वो That's the only road I know. कुल्फी जो मिलती है वहाँ पे यार, उधर क्या पंटर बोला यार तुम. कुल्फी कहाँ मिलती है यार? चौपाटी में. Oh my God, man, crazy मिलता है. और फिर वहाँ पे दिल्ली दरबार है, ओरिजिनल, नॉट द दुबई वन. देखो हैदराबाद से मुंबई मुंबई is gonna be crazy, bro. But yeah, भाई जा रहे तो आपको देंगे नेट्स का रिपोर्ट और प्रैक्टिस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्तफा भाई के साथ. I have a feeling that either in Mumbai or Kolkata, Virat Kohli is coming for the press conference. I don't know which one it is. मगर भाई तो मुंबई रहे, कलकत्ता बोल रहे नहीं, मुंबई आना है because of this will be crazy. मोहम्मद अली चूहू मैन. अंधेरी में अंधेरा bro. भाई तो आजा मेरे साथ. चल भाई चल. फंडर फंड कर दे भाई हम लोग को मुंबई का ट्रिप. कम ऑन. नहीं फिर चेसिंग के नाम कौन कर देंगे. फंडर कर देंगे. फंडर सिखा दूंगा मैं. मुंबई मैन. That's a crazy. सुदीप बाबा बोल रहे पिच रिपोर्ट बोल कल का. ईडन गार्डन का पिच रिपोर्ट बोल. हाँ बोलो. आप देखो नेदरलैंड्स और किसका बांग्लादेश का गेम था. सॉरी श्रीलंका के गेम में it was turning, it was a bit slow, there was something in it for the spinners. So it was the old Eden Gardens of 2012 2013. अपने भाई बोले थे कल. तो मेरे हिसाब से it's going to be a good something in it for the spinners. कल पाकिस्तान बांग्लादेश है, right? Yeah, Osama Mir's time, baby. अजमत उमर साले जल्दी आईपीएल खेलते हुए दिखाई देंगे. Yes, not only अजमत, I think रहमत शाह भी कितने जबरदस्त अफगानिस्तान जैसे उभर के आ रहे हैं. हशमतुल्लाह शाहिदी को भी शायद कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. So there are a lot of Afghanistan players. अभी और एक घंटा कर सकते शो. भंटार आ गया फैन. 18 out of 100 कंफर्म भाई. देखो अच्छा 100 कंफर्म है बोल रहे हैं. किसका? विराट कोहली का 100 इन वानखेड़े कंफर्म है बोल रहे हैं. 18 इज विराट कोहली नंबर, 100 इज भाई. आप मुंबई का पिच रिपोर्ट पूछ रहे हैं. आप एडन गार्ड से वो सारा कंफर्म. कब है मैच? थर्सडे को है. Yeah, if it's on Thursday then yeah, Virat Kohli. हमारे मोक्ष भाई भी है देखो यहाँ पे. पढ़ रहा हूँ. Baby, yeah, that's a producer right there. That's a producer. What are you saying, bro? What are you saying, buddy? Oh, punter is a house. Punter in the भाई कल prediction क्या आपका? पाकिस्तान और बांग्लादेश कलकत्ता में. नहीं 2 मिनट में ले लेंगे माइक. नहीं बोल सकते भाई. अब तो पाकिस्तान तो आई थिंक बाहर है. तो बांग्लादेश packing up for the airport. Yeah. All right. So done. What? Virat Kohli, will he get 250 hundreds in this World Cup? किस पे होने? 48 पे. 48 पे. आराम से.
कौन है वो पंटर? पंटर ब्रो, महफिल जमेंगी बोलो मुंबई में। भाई उन्होंने प्रॉमिस करे थे मिलाएंगे बोल के, दोस्तों से याद है? मिलना कौन से है। दोस्त है याद है आपको? नाम नहीं नकुल हो मगर आपको याद है दोस्तों? Yeah, some big celebrity. Yeah, big celebrities. He's I think connected. Punter is also celebrity, man. Yeah, Punter's a celebrity, bro. So how do you see the top 8? अभी How do you see the top 8 teams qualification of the World To Cup Simba. fair for teams like West Indies who got out of World Cup qualifiers and now are punished in? Sorry, what? How do you see the top 8? Oh yes, okay. Champions Trophy as well. Yeah, I mean, देखिए भाई, again, I don't. That's probably the rule that's been maintained. I don't know how the ICC has, बताए होंगे ICC. I'm pretty sure that is what the situation has always been. कि World Cup जीतो and Champions Trophy भी qualification रहती. Sort of like, if you want to take it in football, saying Euro Cups को qualify कर, it doesn't mean you automatically get qualified for the World Cup. But कहीं ना कहीं I think ICC must have told them, and West Indies knew that they had to qualify for the World Cup to get into the World Cup at least. तो वो भी नहीं करे. And it is a little bit unfair because these two competitions are different. I understand where you're coming from, Parth bhai, but that is again the communication. कल जो मुस्तफा भाई और को मैथ्यू पॉट्स को अगर नहीं मालूम था तो I'm pretty sure वेस्ट इंडीज को भी नहीं मालूम होगा. I'm pretty sure जिम्बाब्वे को भी नहीं मालूम होगा. और ये लोग तो जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे. एंड आई थिंक इट इज अ लिटिल बिट पनिशेबल अगर आप ऐसा देख रहे कि हम लोग अगर वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करे देन हम लोग को चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेलने दे रहे. तो दैट डज सीम अ बिट क्रिमिनल, बट लेट्स सी. भाई पिच रिपोर्ट, पिच रेड सॉइल कौन सा वाला बोले सुदीप दादा? यू कॉल माय ईडन गार्डन्स वानखेड़े. भैया आपको मुंबई वाला मैच में आपको 100% फ्लैट विकेट मिलेगा आपको, बिकॉज मैं वहाँ पिच में जाके आपका नाम लिख दूंगा पिच पे जाके. पिच पे कूद के रहेंगे. और अहमदाबाद से स्टंप लेके आए. पार्थ भाई asking you something. हाँ उसका नेपिंग करना. सही में? Yeah, how do you like, because for me this is like the World Cup qualifiers. नहीं जो भी क्वालिफाई नहीं हुए वर्ल्ड कप में, उनको ऑटोमेटिकली चैंपियंस ट्रॉफी में भी एंट्री नहीं मिल रही. सो हाउ डू यू लुक एट दैट? Bro, it makes it more competitive, right? Now you have even the teams who are not making the semis, they have something to play for. Like England now have to buckle up because you have to make it the Champions. But like West Indies, Zimbabwe, who didn't qualify, they don't get into the Champions Trophy, right? Yeah, okay, but why didn't they qualify in the World Cup in the first place? That's their fault. That is what Mustafa Bhai is saying. My thing is like maybe I don't know what level of communication ICC has right now. Because like अगर मैथ्यू पॉट सोच रहा तो फिर उन लोगों को मालूम नहीं मालूम, वो भी एक चीज है. हाँ नहीं वो तो ठीक है मगर भाई like अगर ऐसा सेट है, they should have West Indies should have been in this tournament, right? They should have won. They should have come in the top 2. बिल्कुल. Don't you think so? Yeah, I think so. But again, these two competitions are different. Like you see, Euro Cup, it doesn't mean directly you get into the World Cup, right? I'm looking at football in sense. Like you have this competition and you have that competition. The World Cup is one competition, Champions Trophy is one competition. तो आप interlink कर दे रहे हो दो को. And then आप जो वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे अगर नहीं खेले तो हैवी पेनल्टी हो जा रही है उन लोगों पे. भाई इनको चैंपियंस ट्रॉफी का भी पहले क्या करते थे, टॉप 8 टीम्स करते थे. उसमें भी यही प्रॉब्लम था. जो लाइक करंट जो अच्छा नहीं खेल रहे उन लोग नहीं आते थे. तो लाइक देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ थिंग. ब्रो दे शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स एंड इफ दे कि भाई आर टीम है तो आर टीम है, खत्म होगी बात. अगर आपको ये रूल मालूम, यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप. आप नहीं करे तो फिर व्हाट इज द गारंटी आप चैंपियंस ट्रॉफी भी क्वालिफाई करेंगे? वो बात भी सही है. आई थिंक दैट्स अ पॉइंट टेकन. बट या जस्ट फॉर मी पर्सनली, इफ आई एम टेकिंग टू डिफरेंट कंपटीशन, मे बी द सिलेक्शन क्राइटेरिया शुड बी, maybe that's where the bilateral should have फिर been आप more क्वालिफाई interesting. फिर कहाँ खिलाएंगे फिर से? आपको ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर. या तो फिर आप ये से शुरू कर सकते हैं बायलैटरल्स को और इंटरेस्टिंग करने के. these could be your qualification देखो बायलैटरल तो उतने होते नहीं वनडेज. आप कभी याद है इंग्लैंड वनडे खेले लाइक बिफोर दिस इंग्लैंड साउथ अफ्रीका इन द समर? या इट्स लॉन्ग टाइम अगो, राइट? नहीं खेलता. टॉप 8 फ्रॉम आईसीसी रैंकिंग्स करते थे पहले. ओ आईसीसी रैंकिंग से करते थे. हां तो वर्ल्ड कप से कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? ईसा बोले मूसा हो जाएगा मसला. तो ऐसा हो जाएगा सिचुएशन. I don't think it's fine with me. Like this is my opinion. I don't look too much into it. Oh, so all right. जी भाईजान. तो या मोक्ष भाई क्या हुआ आपको? I think got information for us. But yeah, I think if you have any questions, you can ask us, and this will wrap up. And tomorrow's Bangladesh versus Pakistan. मोक्ष भाई chicks are waiting for you कहते हैं. टुडे मैच के बोल भाई थोड़ा अफगानिस्तान. भाई सुदीप दादा, शुरुआत के हिसाब से अगर आप शुरू से गए तो हम लोग श्रीलंका अफगानिस्तान की 15-20 मिनट बात करे थे. आधा घंटा. सॉरी मुस्तफा भाई, बात तो करे लंबा. बात तो लंबा करे. उसके बाद भी हम लोग बोले कि पोटेंशियल है बच्चों के और बच्चों को आईपीएल में आने के लिए. बट यस, जस्ट टू गिव यू ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, अफगानिस्तान मौत डाल दिए. फजल हक फारूकी जबरदस्त बॉलिंग करा. एंड या आई थिंक हशमतुल्लाह शाहिद जिस तरीके की कैप्टनसी करा, टीम को लेके चल रहा.
It's been fantastic to see them growing throughout the World Cup. काफी अच्छी growth हुई है उन लोगों की बैटिंग के हिसाब से. बॉलिंग हमेशा हम लोग को मालूम था स्टैंड आउट था, बट बैटिंग जिस तरीके से करे, मच्योर पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे एंड कोलैप्स नहीं हो रहे, दैट इज द मेन डिफरेंस दैट वी सी इन अफगानिस्तान टुडे. मोस्ट इम्पोर्टेंटली बड़े मियाँ कबाब वहां पे नको जाओ बैंड्रा, वो जो ओरिजिनल है वहां पे जाओ. मैं भाई एक काम खतरनाक रहता करूंगा, वो पूरा बड़े मियाँ टाइम कबाब. मेरा फोन ऑन और करूंगा कुल्फी वहां पे चौपाटी पे, फिर वहां पे रियल वो है दिल्ली दरबार, हाँ. और रियल जाफर भाई है उधर, हाँ. द रियल वन, the one which is like the original one. Oh The my original. god, it's crazy. Then Gallup's chicken stroganoff. Oh my god. Oh, Kobe sizzler, Yoko sizzler. Oh, फिर Togo. Golden Dragon Chinese, और फिर वड़ा पाव. Oh हो crazy man. मेरे को भूख नहीं लग रही. मैं मुंबई में क्रेजी है भाई, मुंबई. और भाई भाई अगर आपके पास इफ यू आर रिच गाय, फिर आप वहां पे जाओ बैस्टियन, वहां पे आपको मिलेंगे टाइगर श्रॉफ. Yo, yeah, baby. Yo, listen, Bastion है वहाँ पे. If you want to go, वो उधर ही है, bro. Tiger Shop वहाँ पे शिल्पा शेट्टी उन लोग चिल करते रात में. बंद कर दिए बड़े मियां कबाब फूड इंस्पेक्टर. Oh, this is very shocking news. This is a hard, bro. You know, I'm not joking. That's one of the best kebabs I've had, man. Like यार कोई जगह बताओ क्या यार, तुम भी चले गए वहां. Bastion one, yeah, one commune is विराट कोहली. विराट कोहली का है वो तो. हाँ हाँ, भाई के पास है पैसे, उन्होंने उड़ाएंगे वहां पे. अकीना भी है, बट या. पूना मुटाटा क्या और वायरल बयाने को ढूंढो मेरे लिए, उसका ऑटोग्राफ होना मेरे को. दैट इज अ लेजेंड मैन. तो एक छोटू है ना स्कूटर में रहता था, उसके साथ सेल्फी ले लो. दैट गाय इज नेक्स्ट लेवल मैन. But Mumbai is the city of dreams, bro. That's the Hollywood of India, which is Bollywood basically. Yeah, it's the LA. It's the LA, New York, everything combined. That is the city, man. Yeah, Mike. मैं इधर ही आ रहा हूँ माइक में, हटाया ही नहीं. एजियो है वो ऐप. एसलियो जी. बट हाँ, लाइक आई थिंक मुंबई में जो है, गो यू ब्राउन मुंबई पे. सुधीर भाई, आपके लिए इंशाल्लाह मैं एक दिन क्यूरेटर से बात करूँ, मैं इंटरव्यू करूंगा. अगर आप मेरे को 10,000 व्यू नहीं दिए उसमें, आई डोंट केयर. आप चाचा चाची फुप्पू सबको बताओ वीडियो, मगर मैं करूंगा, बिकॉज एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एज वेल, द क्यूरेटर के साथ. मगर आप पिच रिपोर्ट इतना इंटेंस, आप जो पूछते पिच रिपोर्ट में कोई भी नहीं देखा. सो आई एम गोना मी और फैज वन ऑफ अस विल डू एन इंटरव्यू विद द क्यूरेटर, और आप वो पूरा वायरल कर देना. आई डोंट केयर. या लाइक दैट इज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू. आपका जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स बहुत अच्छा दिखता कि आप इतना नॉलेज ऑब्जर्व कल बोले थे हम लोग को कि दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द नॉलेज कम फ्रॉम. एंड एग्री करता हूं मैं. पिच रिपोर्ट हम देख, और ये भी पूछेंगे उसको भाई कैसा बनता पिच, कंडीशंस कैसे रहते, क्या रहता. कब बड़ा रोलर, आप ये करते, कब गड्ढे डालते पिच में, टर्नर बनाते कैसा, तो ये है. तो डोंट वरी, आप गुस्से में मत आओ. गुस्से में आ रहे थोड़ा बहुत. दादा कलकत्ता में, दादा है कहां के? यूके. Calcutta baby. दादा है. Are you from Calcutta, buddy? Eden Gardens. That's my dream stadium. हम ट्राई करेंगे आपके लिए पिच रिपोर्ट लाने के लिए, पिच बनाने के तरीके से लेके पिच बिछाने के तरीके सब लेके जाएंगे ऑन चेसिंग द टारगेट. बट या आई थिंक दैट प्रीटी मच रैप्स इट. मुस्तफा भाई एंड मोस्ट भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. एंड कल तक हम देखेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश का क्या सीन है. एंड या आई मीन दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. या कल मैं जुड़ूंगा शायद भाई, तो वो खावा देखने वाले कल रात में. माइक बंद हो गया किसका, मेरा यार? अच्छा ठीक है, so I'll wrap it up. Thank you so much for joining us, chasing the target. Make sure you hit the like button, subscribe button, share the videos with your friends and family. हमारे पास एक अभी शॉर्ट हम लोग दारे शमी पे, वो देख लो आप लोग. फिर उसके बाद वो भी आ रहा, धर्मशाला का व्लॉग अभी आया नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा, हो जाएगा वो. और फिर उसके बाद मुंबई से लाइव रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह हमारे भाई. तो that is the plan. So take care of yourselves, have a good rest of the night, and yeah, bye bye.